रास्ते बहुत ढूंढने पड़ते हैं। अगर किसी को आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो आई थिंक जितने लोग हैं तो इंस्पिरेशन आप बहुत लोगों से ले सकते हैं, लेकिन रास्ता तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। Because of people they want to look up to you so much, you give them a lot of advice, and they come to you with a lot of advice, and have 4 of them come to you with advice. Where Raman is concerned, yeah, we have all these eminent journalists here. Like, अभी क्या बोलेंगे यहाँ पे after this response from them, and of course whatever the team just shared with us. Aman, we start with you. How special is this moment for you? I think when we first started shooting this film, I was very nervous. I think we both were because we were just starting out. And I'm still nervous at this stage, but it's also accompanied with a lot of excitement, a lot of happiness. मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग यहाँ आए हैं, and I don't know, I think this moment will stay in my brain forever. Right. One more thing. हर कोई जानना चाहता है. How was it working with this superstar here, Mr. Ajay Devgan? I was so nervous. पहला दिन जब I shot with him, I was shit. What am I going to do? Because I was not seeing the character. I was saying, shit, this is Mr. Ajay Devgan standing in front of me. But I think Ratu sir helped me a lot in that moment. He calmed me down. He said, अपने किरदार को पकड़ो. ये अजय देवगन नहीं है, nervous मत हो. And I think that helped a lot. With what Ratu sir had. And वो दिख रहा है, उस बड़े पर्दे पे वो कंफर्ट दिख रहा है कि हाँ मुझे पता मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ. वो कमाल की केमिस्ट्री दिख रही है. A crazy moment for me. I don't think I ever would have imagined this, me being here with all these beautiful people, because I'm so thankful. Whether it's Ajay sir, Gattu sir, Pragya, Ronnie sir, I'm so thankful. And my co-actors, Amman, Diana, Mohit, I've learned so much from all of them. And I'm actually blanking out. I'm that nervous and excited, and I'm so full of emotion. But this is a dream moment for me. I'm so grateful. All I want to say is just playing it and how. Ladies and gentlemen, Rasha Thadani is our Zordar Talia. We'd like to now invite on stage. So because this was a character that I've not played before, because of the world was, free, independent, and also a town in the middle of India. So there was a dialect. So there was a lot of preparation actually that I had to undergo for the film, just to get into the character, to understand the world better. So besides, of course, we did a lot of sessions where we sat with the director. He's not listening to me. But we discussed character. We discussed, what he feels that I should bring to the table. I had my own opinion, so we kind of came to a conclusion of what the character should be. I also did a few sessions with a drama coach to kind of get under the skin of the character. I did a few sessions with a dialect. फिल्म निकल रही है, लेकिन मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बोला था कि भगवद गीता में लिखा है, कृष्ण जी ने कहा था कि यू जस्ट वर्क हार्ड, पुट इन योर बेस्ट, और फिर जो होता है उसके आगे वो भगवान के ऊपर है. तो कृष्ण जी ने ये भगवद गीता में कहा था, एंड दिस स्टिक्स विद मी क्योंकि इस इंडस्ट्री में there's a lot of emotion, attachment, overthinking, क्योंकि of course trolls बहुत है. So if you listen to each and every one, it is just drain you. So just work hard, do your best, और फिर शुभ जी जो करेंगे आपको सफलता. आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक बहुत कुछ बदल गया. और जब हम आए थे तब एक रौनक थी. अब आज की जो जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा तैयार आ रही है कि उसकी बहुत अच्छी बात है. हम तो सेट पे आके सीख रहे थे और ऑडियंस कहीं हमको माफ भी कर देती थी हमारी गलतियाँ. बट आज की ऑडियंस आई थिंक किसी को माफ नहीं करती. तो आज आपको पूरी तैयारी के साथ आना पड़ता है. और होपफुली आई फील कि दोनों बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है और अभिषेक ने उनको बहुत अच्छा गाइड किया है. जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं अमन को हमेशा डांटता रहता हूँ, उसका कितनी भी मेहनत करे मुझे लगता है कि इट्स नॉट इनफ.
क्योंकि वो एक मुझे पता है कि एक जो ऑडियंस है वो आज किसी को माफ नहीं करती, तो इसलिए आप जितना भी करें उतना कम है। तो ये एक बहुत ज्यादा प्रेशर है आज की जनरेशन में। एक सवाल और छोटा सा था जैसा कि क्योंकि ये फिल्म हॉर्सेस को लेकर ही है, उस बैकग्राउंड के लिए ये फिल्म बनी है, कोई आपकी कोई फेवरेट हॉर्स स्टोरी होगी? क्योंकि पहले की फिल्मों में हीरो को घोड़े पर बहुत दिखाया जाता था। आपकी कोई फेवरेट हॉर्स स्टोरी है बताने लायक? और स्टोरी मतलब पर्सनल स्टोरी मेरा स्टोरी तो नहीं कहूँगा, स्टोरी तो बहुत है, लेकिन उस टाइम पे एक घोड़ा हुआ करता था, उसका नाम था चाली, जिसपे आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में से कोई वो किसी को बैठने देता था। एंड ही वॉज माई फेवरेट हॉर्स, और सिर्फ मैं ही उस पर बैठता था, और मेरी ज़्यादातर फिल्मों में वही था। अब तो वो इज नॉट अलाइव, बट मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर कोई डुप्लीकेट शॉट भी हो तो डुप्लीकेट को भी बैठने नहीं देगा, और उसकी चाल थोड़ी टेढ़ी थी, तो इसलिए मुझे वो बहुत पसंद था, थोड़ा अड़ियल घोड़ा। Good afternoon, everyone. First of all, I want to take this opportunity to thank Gattu sir, Abhishek sir, for believing in me and making me a part of this film, having this profound trust in me that I can play Tej, and giving it an environment, such a homely environment, Pragya and Abhishek sir, so I can deliver my best with honesty. And also making me a part of the film which has Ajay sir in it. And you know, it's a big moment for me. I can't tell you, as Rasha said, it's again मतलब वो शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। लेकिन I would just want to thank him. I'm so grateful to God, grateful to him for making me a part of this film. And thank you Pragya, thank you Ronnie sir, and of course the wonderful cast. डायना, मुझे एक पल के भी ऐसा नहीं लगा कि डायना के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरी पहली फिल्म है। So thank you Diana for making me so comfortable. And of course these two बहुत मस्ती करी, बहुत मजा किया और अच्छा काम करने की कोशिश की है। आई होप सबको अच्छा लगेगा। You know, I am totally driven by the stories that I want to tell. और जब आप कहते हैं कि मैं न्यू कमर्स को लॉन्च करता हूँ, मैं एक्चुअली जो किरदार मेरे कैरेक्टर्स होते हैं फिल्म कहानी बोलने में, मैं उनमें जान डालने की कोशिश करता हूँ। और वो ऑलरेडी वो कैरेक्टर्स में इतने स्टार्स होते हैं, क्योंकि मैं जब सोता हूँ तो उनके बारे में सोचता हूँ। तो जब आप राशा और अमन की बात करते हैं तो मुझे उनमें गोविंद और जानकी नजर आता है, you know, and I am driven. They are, I know them in and out, you know. मेरे लिए वो बच्चे जैसे होते हैं, और ये मेरी पूरी कहानी, सारे कैरेक्टर्स मेरे बच्चों जैसे होते हैं। And I have to do justice to them. I have to do justice to the story. I have to do justice to every character in that film. And I do the best I can, you know. And it's you know, I think भोलेनाथ ऊपर से साथ देते हैं मेरा। और ऐसी फिल्म बनाने के लिए ये इतनी बड़ी फिल्म है, you know, it's not a small, जैसे it's not a project कि आप किसी को लॉन्च करने के लिए आप फिल्म बना। These are not those films. These are very passionately driven films, and you need people like Ajay, you know, because this man is. I've had such an experience working with him. When I sit there, when I talk to him, he's so grounded and he's so secure as an individual. He doesn't like I see so many actors. You know, sometimes they are so insecure about certain factors that play on their mind. He has none of that. You know, and once I have him supporting me and saying, "Yeah, I'm with you on this film," and it's not like he is the only. It's not a Ajay Devgan film. You know, it's Azad, and he's part of Azad, and that's the great part about him. He can fit into a film like this. He can be a singer. He can do a film with Vishal Bhardwaj and become that. He can become anything. He's a chameleon, you know, and that's his mastery on this craft. But I would really like to add one thing, you know, which I don't get the chance to express, because you know, a film like this, to mount a film like this, like I said, it's not just a project or it's not a business opportunity. I cannot do it without the support of Mr. Ronnie Scrivana. You know, this man is such a fabulous individual. You know, when I meet him and I can see he's achieved so much in this field and in other arenas as well. But when you watch him work and the way he thinks, he's like an institution. You know, I learned so much from him about how I should operate. He's creative, and then his business acumen triggers, and the way he checks himself